A lot of people are here. Yes, there are quite a lot of people. I think there are 30 plus people. How many of you are? I think all of you are giving next year prelims. None of you are giving this year mains. Is there anyone who is giving this year mains? Okay, I assume that all of you are giving next year prelims. Harsha, Samir sir? yeah, MS sir will join first. Then after that we'll start. Okay. Okay. Wait for some Okay, minutes. sir. Okay. Yes, sir. Samir sir, you must be in the academy, NPA. NPA only. Okay. So training is going on. It's very hectic actually. So that's why I You can requested sir to keep, if possible, keep it on Saturday because that is the only day we are little bit like free. you can give them a glimpse of your day today, sir, so that they also know how the life of an IPS officer is Yes, in yes, training. obviously. If someone wants to know. But it's very interesting, I What will did you say. do today, sir? Today, actually, Saturday, it was totally free. Like only in the morning we had some activity. After that, totally we are free. And the Sunday is also like that. Saturday depends on the situation. Like today, generally in some days we have some indoor activities. Otherwise, Saturday is free. And Sunday is also like that. And the rest 5 days, like totally we are packed till 7:30 p.m. So actually, this is Kalam, the life of a police officer, na? So they try to mold it like that only. sir, You will also enjoy. sir, You have the experience anyway, so it will not be an issue. sir. Yeah. We have Madhusudan, sir. Sir, you Okay. can start it off. Sir, your mic is off. Yeah. Sir, your mic is off, please. In the meantime, I will give an introduction of myself. I'm Harshavardhan, presently a ACP trainee in Delhi Police. I'm a DANIPS officer, and this year I got rank 318, and most probably I'll be getting selected into the IPS. And this was my sixth attempt. I cleared in my second attempt. I got into IRPS Railway Services. Then in my fourth attempt, I got into DANIPS, and this time it was my sixth attempt. And now you will get to know about more about Samir sir. Samir sir, introduction of you. Hello, everybody. I'm Samir Kumar Jena. This year I've secured rank 273. Currently, as Harsha told, I'm in officer training in Indian Police Service. Currently doing training in National Police Academy. Before this, I was also selected in Civil Service 2017 and got Indian Revenue Service Income Tax. This was my fifth attempt in which I got selected. Probably I will get Indian Administrative Service. Thank you. We'll talk in details regarding mains preparation. Thank you. MS sir, is your mic ready? I think there seems to be some problem with your mic, sir. We are not understanding what you are trying to communicate, sir. Could you please type it out?
Okay. In the meantime, I'll tell about how Madhusudan sir and Piyush sir helped me this year. Actually, me and Piyush sir, we were studying together during my second attempt in Bangalore. That is how I came across Piyush sir. And then, to his bad luck and to my good luck, he didn't clear the examination. He started Kalam IAS. And he's helping a lot of people like me. This time I was with sir for my mains preparation and also for my interview preparation. I think out of the many reasons that I succeeded, these two played a very big role. And I think all of you are in safe hands under their guidance. So they are friends, they are mentors, they are teachers. That's about MS sir and Piyush sir. What about you, sir? Samir sir, how did you come across them? Yes, actually both MS sir and Piyush sir are, I think sir is connected. So, yes, sir. MS sir, are you connected? I think he's connected. But I might be but audible. his voice is not. You're audible, sir. Okay. So there are many problems in Rajasthan these days because of that Udaipur incident. What has happened that what has happened that they have stopped the mobile internet. और मोबाइल इंटरनेट बंद होने की वजह से आपके पास वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वाईफाई ओनली. सो अगर वाईफाई में कुछ कमी हो जाती है तो देर इज नो सेकंड ऑप्शन विद अस. ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी जब मैं कनेक्ट कर रहा था वाईफाई के थ्रू, सो व्हाट वाज हैपनिंग कि आई वाज एबल टू लिसन टू योर टॉक बट आई वाज नॉट गेटिंग ऑप्शन टू अनम्यूट माई सेल्फ. तो आप लोग बार बार बोल रहे थे कि सर आप सुनाई नहीं दे रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट करो, और मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं आया था. स्क्रीन वाज ब्लैंक. माई वीडियो वाज गोइंग, आई वाज नॉट गेटिंग एनीबॉडीज वीडियो. ठीक है. चलो एनीवे, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. Let me share the PPT that I have prepared. वैसे PPT में कुछ है नहीं क्योंकि the two people जो यहाँ पे गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें हम ज़्यादा सुनेंगे, उनके थ्रू ही हम चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे उन्होंने एक समय था जब they have also failed in the prelims and how they converted it into an opportunity rather than getting bogged down by the failure. तो इसी को ही तो बोलते हैं ना कि सुरमा वो होते हैं जो विचलित नहीं होते हैं, किसी भी समय पे वो धीरज नहीं खोते हैं. तो दिस इज समथिंग जो कि इनसे हमें सीखना है. सो आई गेस इतनी देर में ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद हर्षा एंड समीर, और डू आई नीड टू इंट्रोड्यूस अगेन? चलो इन शॉर्ट हम कर देते हैं, बाकी ये लोग जब अपनी जर्नी खुद ही बताएंगे इट वुड बी बेटर if they explain things. As you can see in the screen, Samir Kumar Jena has got rank 273 and he is likely to be IAS this time. ठीक है. And Harshavardhan has got rank 318. He is likely to get IPS and he wanted to be IPS only. ठीक है. उसने अपने जो DAF भरा था, तो DAF में the only service that he has opted was IPS. ठीक है. और लास्ट टाइम जब उन्होंने क्लियर किया था ही हैड ओनली टू चॉइसेस, आईपीएस एंड डैनिप्स. भाई हमें पहननी वर्दी ही है. तो आई हैड अनदर फोटो ऑफ हर्षवर्धन एज वेल जो उसने डैफ में भरा था. तो फिर मैंने कल हर्ष को बोला कि हर्ष अब यही चीज सूट करते कि वर्दी में तुम्हारी फोटो जो है हर जगह पे जाए.
ठीक है, so that's why I got his another photo. एंड अब ज्यादा जो है टाइम लेते बजाय आई वुड इनवाइट, हमारा शेड्यूल इस टाइप से रहेगा कि समीर वुड एक्सप्लेन मोर थिंग्स अबाउट मेंस, and then Harshavardhan would explain things about prelims, and then in the end we shall be taking question and answer. जो भी आप लोगों के हैं, कुछ लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो है हमें भेजे भी हैं, और बाकी आप लोग लाइव डिस्कशन के दौरान भी क्वेश्चन एंड आंसर पुट कर सकते हो, सॉरी अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो, उसको हम लास्ट में एक साथ ले लेंगे, ठीक है? So now over to you, Samir. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, yes. Good evening, everybody. I think I've given my introduction. So let's directly go to the topic for discussion. That is what to do now. So you have two options. Either you can chill for some days, like 3-4 months, and again jump for preparation for next year, or continue with this momentum in which momentum you have started your prelims preparation for this time. So first I will give two examples, like what is the benefit if we continue our preparation. I will give example of one of my friends first. He is now currently IS officer 2017 batch, qualified through civil service examination 2016. So it was his second attempt, and before this in 2015 he failed in prelims. But before prelims result, so but although he failed in prelims and he serious wrote all the tests, and the end result is in 2016 examination he qualified with all India rank 94 and joined as IS officer. And I have talked with him also regarding this, and he told that really this preparation, serious preparation of 3-4 months, it helped him immensely in writing CS 2016 mains. So I can also give my example. In 2017 prelims, 2016 was my first attempt in which I failed in prelims. But I joined some test series, and I wrote all the 25 tests seriously. Although I didn't work on my self-improvement because I didn't have much idea what to do. But still, because of this writing only, I was able to secure 684 rank in 2017 and got Indian Revenue Service. Okay. So what to do? So the benefit to what we can get by preparation, by continuing this journey of mains preparation, is that it will add to our consistency. Okay, because as you know that nearly 1.5 years of current affairs needs to be prepared before mains. So if we go on preparing like this, automatically with time, this current affair things will get covered. And also this is the time of self improvement. Okay, so because prelims और mains के बीच में ज़्यादा time नहीं मिलता है हमको कि self improvement पे काम करें, because like we are bombarded with optional essay, we have to prepare all the GS papers, so we don't have much time. Only like 3 months, maximum 3 months we get, and we have to prepare all these subjects. So self improvement का यही time रहता है. अगर आपका कोई point weak point है तो आप इसमें काम कर सकते हैं, और ऑप्शनल और एक पॉइंट है जिसमें हम लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं. ओके, सो आर यू ऑल गाइस कंफर्टेबल विथ हिंदी? जस्ट आई वांट टू कंफर्म इफ anyone has problem with Hindi, then okay, fine, then we can talk in English. Then okay, fine, we'll talk in English only. Fine, thank you. So very short, that so that after this discussion we'll talk like through question answer only. We'll discuss many things if we have any doubt. Okay, so first important thing which we need to focus on is syllabus. Okay, so many times I've seen, like my friends also, even when I started my preparation, that we just go on studying without knowing that what are the syllabus we have to cover. Okay, so most important point is that we should know the syllabus, that what are the points of syllabus, so that we can study accordingly. Like whatever we are studying, suppose we are reading some newspaper, we are reading some magazine, or getting some notes, we should know that from which part of the syllabus it is, and we should be able to correlate it. It will also help in our revision. Okay, then how to do self improvement, because as I told, this is the most important part, is like if we go on preparing in this time, this will help in self improvement, because this is the time we have got to improve on ours. Because like whoever are writing their second or third mains, you'll be noticing that like what to do. So sometimes we are not able to understand exactly what are the areas we need to improve. Okay, so you should work on this, that what are the points to improve.
And for this, you can do one thing, that you can join some test series, any test series you want, so that it will help in like preparing your schedule and add to your consistency also. Okay. And then how to maintain the format of answers also, this is an important thing. Okay, this like many a times you have seen that we just go on writing, but we forget that there are so many answers also. You need to maintain a format like introduction, body, conclusion, all these points we miss. So self improvement is a point on which you should work on. And then yes, note making, another point. So I will say that initially we don't find it much important, but after prelims, in between mains, okay, prelims to mains, we don't have much time. Okay, so if you have short notes prepared for many topics now, this will help you in your revision. Okay, like there is like very less time is left in between prelims to mains. And this notes making, if you have already ready-made notes for this in these 3-4 months, obviously this will help you in this in between prelims to mains. Okay. And then I will focus on some specific topics on which we need to focus more, because as we have seen that if we read newspaper or some other things, now mostly articles are related to economics or polity. Like we give more importance to these topics. Yes, obviously we need to give importance, but in because of this we sometimes neglect some small topics. Okay, like for example in general study paper 2, international relation, or in general study paper 3, internal security, society in general study paper 1. So these are the topics, if you see, like economics or politics, these are very vast. We need to give like lot of time, we need to invest. But if we devote less time, okay, but if we devote less time, we can but if we look at the number of questions coming, for example, in society, 4 to 5 questions every year it is coming. Similarly, in IR or internal security also, every year 4 questions are coming. So by giving less effort, we can score more marks. So this is the point, that we should focus on small topics also equally. We should not neglect these topics. Okay. And how to prepare these topics, I can say that in such type of topics, now for example in internal security, like there are some small keywords are mentioned. We can prepare ready-made notes like definition, some small facts, and how to write some conclusion, ready-made conclusion. We can prepare these points, and this will help us in our revision in between prelims and mains. Okay. And like model answer also, whenever you are joining some test series, we should read the model answers, and also we get many times some beautiful points which can note down in our notes, and it will help us in our revision. Okay. uh, so another important point is ethics general study paper 4. So many a times we neglect this part. This is like if we see, like in terms of syllabus, point number of syllabus, like points in syllabus, this is the like least, like smallest syllabus among all the GS papers. But we don't give much focus on it, because generally we focus more on polity and economics. But it is a very scoring subject like in this regard, you can do one thing, that first go to the like all the keywords of videos he has made on some keywords like integrity, what is objectivity, what is emotional intelligence, and beautiful examples are given on this. So in my mains also this time, this all the examples are very much helpful. Okay. So you can work on these points like on ethics. Then another point is to do some improvement. Like many times we have seen that we go on right, there is no value addition. This is the biggest point. Many can multiple times they write the mains, but still either their marks are improved or they're not able to get a good mark. So the main point is that they don't try to improve. Like whatever answers they are writing, they go on writing like this. Suppose any question is asked, if we go on like writing the same generic points which everyone writes, then obviously we are not going to, there is no value addition, and we are not going to get, like we will get the general marks whatever like other people are getting. So what are the value addition we need to do? So one point is that how to write a good intro. Okay, like I will say that this time I joined this core batch of Kalam IS. This was very helpful in like value addition, like to know what are the value addition points. Okay, so for example in economics, if ever we are giving an answer, we write an like fact or some statistics to justify our points. So whatever we are writing, if we are able to justify it with some facts or some good examples, then this leads to a value addition.
Similarly, for example, we are writing an answer on polity. So if we are able to mention some important Supreme Court case laws, this leads to value addition. Similarly, towards the conclusion also, if you are able to write a good case study, like maybe it related to some state or maybe related to some local area, some good practices, this leads to a value addition. So if we are able to mention some types of good value addition points or some good committee recommendations, depending upon the question, then this leads to a value addition. And definitely it will add some 0.5 or 1 marks in your question. So just think, if you are getting 0.5 to 1 marks in every question, so how much it can lead to increase in your score. So it's a huge amount. If you will see like 4 GS papers. So this is a point we need to focus on our for self improvement. Okay. Then another point is correlation. So but I think Harsha will tell. So now I'm talking on mains. Okay. Yeah, we will take Yes. Samir Okay. questions in the end. Then correlation. So what I found is that many times whenever we are studying like general study papers like GS1 or GS2, we study them in silos. So rather than studying them in silos, we should try to correlate, because many times if you see, like all the GS papers are correlated. For example, general study paper 1, human geography. So many small like topics in human geography are related to economics also. Like human geography, there are primary, secondary, tertiary sector, and like industrial development and infrastructure, these are in economics, and agriculture. So agriculture, primary sector, all these are related topics. So rather than studying them in silos, we should try to correlate them with each other. So this will add to our value addition also, and also it will help in our coverage of syllabus quickly. Okay. So don't just confine yourself to that, okay, I'm studying geography. So economics, this topic of GS1 can be correlated to which other topics. Okay. Similarly, social justice, this is part of GS2, but it can be correlated to paper 1 of society. Okay. So this is an important thing that you should try to study in an integrated manner. This will help in coverage of syllabus also quickly, and value addition also can be made. Also, another benefit of it is that, okay, we'll take the questions afterwards, na sir? Okay, we'll take the questions. So even like I will take example of Piyush sir also, that during the last year core batch also he gave many examples, like the examples which can be used in multiple places. For example, some case study he gave related to PESA Act. Okay, so PESA Act is also somehow related to tribal development, also somehow related to environmental protection also. Just think like this, Forest Right Act, for example. This is also related to tribal development and also environment protection. So such type of things, that some examples are there, like not only some examples, many examples are there which can be used in multiple places. So just think on it. So like if we practice more and more, then only we can know that, okay, these are the areas we can use multiple, one example can be used in multiple places. So this will help us to remember less facts and use these less facts in multiple places. Similar is the thing with ethics also. Like sir has told in many places, like one example how it can be used. For example, one example related to integrity, it can be used in some other topics in ethics, like maybe emotional intelligence, or maybe some other, like what are the good qualities for a civil servant. Okay. So then another important point is related to optional. Okay. So like we gave so much time on GS, and in between sometimes we lose our focus on optional. But mind you, one thing I am telling, optional plays a very important role in getting a good rank and in your selection also. Okay. So in between prelims and mains, literally my optional is civil engineering. So just a generic guideline I'm giving, because like particular optional, these things can be discussed later. So because we don't have much time between prelims and mains to like start reading our optional fresh and then start answer writing. So always give equal importance on optional, at least in this time, because this is the time you can complete your syllabus related to optional. And if you complete the syllabus before you start preparation for it, like you full on you switch to your like prelims mode, this will definitely help you in after prelims for mains preparation. Because the thing is that like nearly 2 to 3 months you are full on prelims preparation, and between we lost our touch on optional. Okay. So for this reason, it will be better if you can complete your optional before at least you switch to your prelims preparation.
And another important thing I would like to say is that revision. Okay, so whatever facts or good case studies or good points you are writing in your notes, always periodically revise them. And if possible, if daily revision schedule you can make, then this can really help you in your answer writing also, because these are the most important value added points, because generic points everyone will write, and if you write the same generic points again and again, you will get the same marks, and this will not lead to your like getting good score and selection. Okay, so like it's very difficult to remember many facts and like case studies or these important Supreme Court judgments. So for that, you can make some schedule like daily schedule, and you can remember the facts accordingly. So if you go on revising again and again and use them in your like whatever test series you are writing, then definitely this will help. And one more thing related to test series I would like to say, that be sincere in your test series writing, because like whenever we are joining some test series, generally these are flexible. Okay, so like one date this test series starts, then you can write like till your last date, like maybe next year till the end of May. But so we go on thinking that okay, let's to suppose after 7 days quality paper is there, so I think that okay, I've not been able to complete the syllabus, so let's delay it for the next 7 days. So by this attitude, this all the papers goes on piling, and maybe towards the end of prelims it will be like 15-20 tests would be pending, and you'll feel like Arey yaar, I can't write the test again and again. Like hardly you write 6 or 7 tests, and really I'm telling, it will be of no use. Like if you write tests, then only you can know your weak points. You write your tests, you are reading your model answers, then only you can know your weak points, then only you can work on it, and it will lead to your actual self improvement. Okay, it's very easy to say this, but very difficult to maintain this strict discipline. And if you are not able to maintain this discipline, again the same thing is going to be repeated. So, and this is the most important thing. Then now, sir, I would request if then any like prelims related anything, sir can say. Yeah, thank Thank you, you. sir. थैंक यू समीर। हमने काफी ससेंटली जो है काफी सारे पॉइंट्स रखे यहाँ पे। लेट मी स्विच ऑन टू द अनदर। Good evening, sir. Hello, sir. Yes, Himanshu, I think sir's microphone is not audible. Sir, MS sir, you are not audible, sir. Audible, sir. I'm audible, sir. Himanshu, you are audible, but I think MS sir has some problem. Sir? Yes, Am I yes, yes. audible Now, now? MS sir, you are audible. Sir. Okay. Sir, I have one question to ठीक ask, sir. है। How to approach ethics, sir? How to approach ethics paper 4, sir? Yeah, हिमांशु we will take it। ठीक है, just hold on। Okay, sir. Okay. ठीक है, पहले कुछ बेसिक चीजें अपन क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है बहुत लोगों के कॉमन डाउट Yes. हो, वो कॉमन डाउट एक बार एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक डाउट हम लोग लास्ट में लेंगे। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है। Here one thing that I would like to summarize whatever things that Samir has said। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समीर ने कही है वो ये है कि ये वाला टाइम जो अभी का है वो वेस्ट नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत टाइम है, क्योंकि टाइम सही में बहुत नहीं है। आपको ये दिखेगा कि यहाँ से तो अभी तो साल भर दूर है, ठीक है, बट वो साल भर कैसे निकल जाएगा? पिछला साल भी तो निकला है आप लोगों में से बहुत लोगों का, ठीक है, वैसे ही अगला साल भी निकल जाएगा। और अगर आपने तरीका अपना ये रखा, एटीट्यूड ये रखा, ठीक है, जैसे समीर ने बताया ना कि समीर ने इतने सारे टेस्ट लिख दिए थे जब उसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था जिस साल, उसने उस टाइम को यूज किया। he converted that into an opportunity। ठीक है, सेम अभी हर्ष विल आल्सो टेल यू हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर द व्हेन ही फेल्ड इन प्रीलिम्स वंस इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सारे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी ना कभी फेल हुए होते हैं, बट ये होता है कि वो फेलवर के बाद वो उसका गम नहीं मना रहे होते, वो अगले बैटल की तैयारी में तुरंत लग जाते हैं। ठीक है, यही उनको डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से। और जो एक लास्ट में बात कही समीर ने कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वो आजकल ऐसा हो रखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह मिलने लग गई है। हम लोग पहले आंसर में लिखा करते थे कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इज नॉट गुड। उसको सारे कोचिंग इंडस्ट्री ने सबने अपना लिया कि चलो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बट फिर उसका जो है साइड इफेक्ट दिखने ज्यादा लग गया है। ठीक है, लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं करते, आपको मेंटेन करना है। ठीक है, एंड इट्स लाइक जैसे पिछले साल जो कोर बैच पे थे, जब समीर और हर्ष दोनों थे, तो हमने एक एपीआई इंडेक्स बनाया था कि एपीआई इंडेक्स में डेली उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितने का आंसर राइटिंग किया,
और नहीं किया तो क्या रीजन उनके रहे, वो खुद ही से इंटर करते थे और उसको हम भी मॉनिटर करते थे। हमने मतलब उनको कॉल भी जाता था कि आपने आज की एपीआई एंट्री नहीं करी है। जब ऐसा दिखता था कि किसी ने ऑप्शनल नहीं पढ़ रखा है तो हम कॉल करते थे कि ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। वेन एमएमपी सेशन कोई लगातार मिस करता था तो उनको हम कॉल करते थे, एमएमपी सेशन क्यों मिस कर रहे हो, ठीक है। और हर किसी के कुछ ना कुछ रीजन रहेंगे, हर कोई वैलिड है। अब पॉइंट यही है कि अगर आप एक्सक्यूज देते हो तो आप किसको एक्सक्यूज दे रहे हो, खुद का ही नुकसान है आपका, ठीक है। आइदर यू गिव एक्सक्यूज, क्योंकि आप अगर एक्सक्यूज दे रहे हो कि सर हम तो शादी में गए हुए थे, या मेरे पैर में दर्द था, पेट में दर्द था, व्हाटएवर, कोई एक दूसरा बंदा है जो फिट है, जो फुल्ली अवेलेबल है, और वो सीट ले जाएगा आपकी, ठीक है। तो कुछ भी एक्सक्यूज दे लो, अल्टीमेटली इट्स योर लॉस, ठीक है। एंड देन समीर टेल वन मोर पॉइंट वेरी ब्यूटीफुली कि जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो होलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए एक अच्छा सा एनालॉजी मैं दूंगा। इट्स लाइक जब बैट्समैन होता है ना, वो वेट कर रहा होता है कि कौन से वीक बॉलर, फोर्थ बॉलर, फिफ्थ बॉलर आएंगे और उन पे हम खूब सारा रन स्कोर करेंगे। दीज फ्री सब्जेक्ट्स आर लाइक दैट, जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सिक्योरिटी है, ठीक है। ये वैसे ही एकदम रिपीटेटेड क्वेश्चंस आते हैं सिक्योरिटी में। आप देखोगे हर दूसरे साल वो साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन आ जाता है, सेम सोसाइटी पे है, एक वुमेन पे आएगा, एक वो वुमेन ग्लोबलाइजेशन को डिफरेंट चीजों से लिंक करते हुए क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। सो यू कैन प्रिपेयर जो रेडीमेड आंसर जाके 6 से 8 नंबर आ जाए, ठीक है। और आपको एट द सेम टाइम ये भी रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमें बुमराह के ऑर्कर पे बोल्ड हो जाना है। हमें उसके लिए भी तैयार रखना है कि किसी दिन अगर बुमराह का ये दिन खराब रहा, पॉलिटी के, हिस्ट्री के इजी इजी क्वेश्चन आ गए, उसमें भी हम 8 10 में से 8 नंबर के आंसर लिख पाए, ठीक है। डिफिकल्ट रहेंगे तो हम 5 6 नंबर उसमें एक कंसिस्टेंटी मेंटेन करेंगे, 5 5 नंबर हमारे आते रहे, ठीक है। तो दिस वुड बी द अप्रोच। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बीच में एक्सप्लेन करूंगा कि इस साल जो हम कोर्स लेकर के आए हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चीजें डाली है। तो अभी से जैसा कि सब अभी तक क्लियर हो रखा होगा आप लोगों को कि अभी से जो तैयारी करनी है, वो तैयारी में मेंस की भी तैयारी करनी है और प्री की भी तैयारी करनी है। तो वी हैव टेकन गिवन द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड कोर बैच दिस, ठीक है, जिसमें पहले शुरू के जो 6 महीने रहेंगे टिल दिसंबर, इट वुड बी मोर अबाउट मेंस, एंड देन द नेक्स्ट 6 मंथ वुड बी मोर अबाउट प्रीलिम्स। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 6 महीने आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने की जरूरत है। हर्षा विल टेल मोर अबाउट इट। बट ये है कि हाँ, आपको प्रीलिम्स पे उस अगला सेमेस्टर में ज्यादा ध्यान देना है, इस सेमेस्टर को पूरी तरीके से मेंस पे डेडिकेट करना चाहिए। अब इसमें मेंस पे जो हमारा वी हैव गिवन द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड कोर बैच, इसमें एक चीज ये होगी, देयर आर एमएमपी सेशंस, देयर आर जीएस टेस्ट सीरीज, देन देयर वुड बी फ्यू डेली एमसीक्यू, ठीक है। इट वुड सिंपली 5 MCQ जस्ट टू कीप योर फियर ऑफ प्रीलिम्स अवे। काफी सारे लोगों को जब वो प्रीलिम्स में फेल करते हैं तो उनको एक थोड़ा सा फियर होता है कि पता नहीं मतलब कैसे होगा, दोबारा से क्वेश्चन नहीं होगा। तो उस फियर को दूर रखने के लिए डेली बस प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करते रहो। पढ़ना नहीं है, सिंपली प्रैक्टिस से आपको 5 क्वेश्चन देना है। कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते रहेंगे डेली बेसिस पे, ताकि करंट अफेयर भी आपके दिमाग में प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या चीजें आती है वो चलती रहे, बस इसका इतना ही पर्पस है। और एक हम एपीआई भी मेंटेन करेंगे, एस्पिरेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिससे आपको ट्रैक रखेंगे कि आप कहीं रास्ते से भटक तो नहीं रहे हो। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े में बहुत एनर्जी होती है, वो दांत, लेकिन उसके दोनों तरफ हम आंखों में पट्टी लगाते हैं क्योंकि वो एनर्जी को जो है डाइवर्ट होने से रोका जा सके। और ये बहुत जरूरी है, आप लोगों में सब में बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी को डाइवर्ट नहीं होने देना है, सीधे रास्ते में आपको एम की तरफ चलते जाना है, ठीक है। थोड़ा सा जो एमएमपी सेशंस होंगे वो मिनी टेस्ट होंगे 1 घंटे के। जो जीएस टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट होंगे वो 3 घंटे के होंगे। इन टेस्ट में फेस टू फेस इवेल्युएशन होगा, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट समीर ओनली और हर्षवर्धन हुएवर इज विलिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा लोगों को फेस टू फेस इवेल्युएशन के बारे में बताओ। हम तो बताएंगे ही, ठीक है, कि यस सर। पिछले साल फेस टू फेस इवेल्युएशन में कैसे फायदा हुआ, हाउ यू यूटिलाइज एंड हाउ इज इट बेटर इफ इट इज और नॉट बेटर। Okay, sir. Yes, I joined sir's core batch last time after prelims. The main feature of this face-to-face evaluation is that suppose you wrote any test series or any essay test, then after that you will book your slot, and either MS sir or Piyush sir, they will directly connect you through like Zoom meeting. Then in front of you only they will evaluate. For example, you have written an polity test.
then in front of you, like depending on like maybe 5 to 6 questions, some 10 marker 3 to 4 questions, or 15 marker 2 to 3 questions, they will evaluate in front of you. So the benefit is that like before what we are doing, you are just writing the test, and after that in other test series someone was just checking your answer sheets, and they were returning it back. We are not able to know exactly what are the mistakes you have done. Okay, just they were writing superficially, just comparing it with the model answer. Whatever the things you can also yourself do. Okay, but the benefit of this face-to-face evaluation is that in front of you only, sir will read your every point of your answer, what you have written, and what are the improvements to be needed. For example, there is a big question. Like in paper 2, if you look at the previous year's questions, like many times some long questions are asked. Like these questions are so long that sometimes you are not able to understand. Yeah, we are not able to understand like what is the questions, क्या question में पूछा क्या है. Like once we start the question and in between we get lost. Okay, what is it asked and what we need to write. So sir in between breaks every line, every point, and like for example this question can be divided into 3 to 4 lines. So and how we need to write an intro for this part, and what is the exactly the question is asking, and what are the body part we can write, how we can correlate by giving examples, and what are the conclusion points we can make, and what are the mistakes you have done. For example, like initially when I started writing, like my intro points were getting very large. Like intro should be ideally completed like in 20 to 30 words. Okay, but sometimes my intro was getting maybe 50 to 60 words, so it was unnecessarily killing my space. So that was the points sir repeatedly told me, and I was able to work on it also. So these are the points actually, what are the mistakes we have done, that we are able to know through this face-to-face evaluation, and we are able to work on it. Then and sir also writes what are the like mistakes we have done, and next face-to-face evaluation he checks these points whether you have worked on this or not. Okay, so that like we are not, if we are doing the mistake again and again, then sir obviously tells okay, look, you are not improving, and then it gets to our muscle memory, and we are able to work on it. So this is the best part with the face-to-face evaluation, what I have felt. Thank you, sir. Again, it's not audible, sir. Sorry. So it's like जब हम फेस टू फेस इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, तो आप हर थोड़े दिन बाद you meet with us and we tell you कि what are the things you have done, what are the things you have improved, and what are the things you have not improved. आप उस डिस्कशन में काउंटर भी करते हो कि सर मैंने तो ये सोच के लिखा था, या पिछले बार आपने ये बोला था, ठीक है, या फिर पीयूष सर ने ये बोला था, या मैंने दुनिया में कहीं और से ये चीज पढ़ी है, ये क्यों गलत है. ठीक है, जब वो चीज हम आपको आंसर करते हैं कि ये चीज क्यों गलत है या ये गलत नहीं है लेकिन इससे ये बेहतर है, तो जो अप्रोच चेंज आता है किसी भी पर्सन में, दैट अप्रोच चेंज रिजल्ट्स इनटू बेटर आंसर. whatever your approach is being reflected in your answer. और अगर वो अप्रोच करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर करेक्ट नहीं होगा. हम कितना भी बोल दें कि आपको ये लिखना चाहिए था, ये कंटेंट लिखना चाहिए था, ये भी एग्जांपल लिखना चाहिए था, आप बोलोगे ठीक है लिखना तो बहुत कुछ चाहिए था. देन इफ आई टेल यू कि यस दूसरा किसी बंदे ने लिख रखा है, कई बार हम सामने से कॉपी भी दिखाते थे कि देखो ये, मतलब हर्ष की कॉपी शायद सबसे ज्यादा बार दिखाई गई होगी किसी और को, ठीक है, हर्ष इतना अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखता था कि ये अगर कोई और लिख सकता तो तुम क्यों नहीं लिख सकते. And definitely Harsh would have been a catalyst in success of many other students. तो ये भी फायदा होता है कि अगर हाँ आपको भी लगेगा कि हाँ अगर कोई और लिख सकता है तो हम भी लिख सकते हैं, कोई और अगर 10 घंटे पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं. इट इज डुएबल. जो आपको लग रहा होता है कि ये तो कर ही नहीं सकते. ओके, हियर इज द शेड्यूल. इस टाइप का शेड्यूल होगा. हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 जुलाई से, फिर 11 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, ऐसे 3 या 4 दिन के गैप पे इन सब के सिलेबस होंगे. फिक्स सिलेबस होगा कि इस सिलेबस के लिए इसका 1 घंटे का आपको जो है पेपर मिलेगा, फिर अगले सिलेबस का 1 घंटे का पेपर मिलेगा, फिर उसके अगले सिलेबस का 1 घंटे का, बीच में 2-3 दिन का गैप है जिसमें आपको इसी के सिलेबस की पढ़ाई करनी है. इसके बाद इन 1 घंटे के टेस्ट का डिस्कशन होगा. डिस्कशन वीडियो होगा जिसके थ्रू आप सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे. डिस्कशन में जैसा समीर ने बताया, डिस्कशन में इस पे फोकस होता है कि कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, क्या वैल्यू एडिशन किए जाने चाहिए थे, क्या एग्जाम्पल होना चाहिए था, किन किन चीजों से आप कोरिलेट कर सकते थे इसको. ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि एमएपी सेशन के दौरान हम ये भी बताते हैं कि किन किन चीजों पे यही एग्जांपल और कहाँ यूज कर सकते थे, या फिर पिछले एमएपी सेशन में जो हमने एग्जांपल दिया था वो यहाँ भी यूज हो सकता है. तो दिस इज हाउ धीरे धीरे वो कोरिलेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है. एंड देन इन 3 एमएपी सेशन का जो सिलेबस है वो कंबाइंड हो करके यहाँ पे ये जो है अगले दिन
जो भी 3 दिन के 4 दिन के गैप के बाद इसमें 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे। तो ऐसे 8 टेस्ट होंगे पहले, ठीक है। और हर टेस्ट से पहले 3 MMP सेशन है, और फिर लास्ट में 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एक एक हफ्ते के गैप पे, ठीक है। ये साइड में आपको डेली MCQ आते रहेंगे, जिससे कि आपका वो प्रीलिम्स का फियर दूर हो सके। तो इस तरीके से 22 दिसंबर आप एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी खत्म कर लोगे, और उसके साथ साथ 24 जो है MMP के सेशंस के छोटे छोटे आंसर राइटिंग भी कर लोगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलावा अगले साल फिर से आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। दिस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर 23, बट दिस इज द बेस्ट वे वेदर यू कैन यूटिलाइज इट। देयर वुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, कि जैसे किसी का ऐसा हो सकता है कि बीच में जो ज्योग्राफी का सिलेबस हो उसमें उसने अभी तैयारी अच्छे से नहीं कर रखी है, किसी का हो सकता है कि पॉलिटी अभी अच्छे से तैयार ना हो, या किसी की हिस्ट्री तैयार ना हो, ठीक है। तो वहां पे वो अपने सेशन को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, टेस्ट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। हाउएवर वी वुड से कि आप हमेशा ही ऐसा करो कि अगर आप कोई एक वीक जोन में एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है जिससे आप टाइम कम कर रहे हो, ताकि ओवरऑल आप शेड्यूल के साथ बने रहो। मान लो आपने ज्योग्राफी में 4 दिन के बाद टेस्ट था, उसको आपने 6 दिन कर दिया कि आपको पढ़ने के लिए और जरूरत है, तो बदले में आपने कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया जिससे कम किया। पॉलिटी में हो सकता है 4 के बजाय आपने 2 कर दिया हो, ठीक है, ताकि ओवरऑल आप 6 महीने में सब कुछ कंप्लीट कर सको, एक बार रिवाइज कर सको। अगर किसी को और जरूरत होती है तो हम बाद में एक्सटेंड करेंगे, फैसिलिटी वो रहेगी, ठीक है। someone was asking about the price, although I have thought कि इसको हम लास्ट में बताएंगे, but let me tell you, MMP सेशंस जो होंगे, ठीक है, it is 4,500, and this GS test series is priced at 13,000. Daily MCQ is and API, ठीक है, ये फ्री है अगर जो भी ये पैकेज लेंगे उनके लिए, ठीक है। इनका कोई प्राइस नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। एंड देन आई विल मूव नेक्स्ट। नाउ आई वुड इनवाइट हर्षवर्धन। हर्ष, please share some insight about prelims, and if you want to add something about the mains, you may also do that. Harsh, are you there? Yes, sir, I'm there. Yeah, please. So I'll tell you briefly about my journey for prelims. Till now, I've given 6 prelims, and I think you're all smart. You won't need 6 prelims, unlike me. In my first prelims, I got 96. I cutoff was 102. Harsh, you were smart too. You got rank in second prelims only, right? Yes, sir. But they will get a single digit, double digit rank in their next prelims. Yeah, definitely. तो अगले साल फिर जो है हमें नए टॉपर मिल जाएंगे जिनके साथ हमें सेशन कर रहे होंगे। Yes, sir. And he or she is already sitting here in our group among the 40 of them. So I got 96 and cutoff was 102. I was heartbroken. I thought, how can this happen? I was so sincere. I was studying from my first year of engineering. It was nearly a 5-year preparation. This is in 2015. I was just 1 month after. This was just 1 month after my graduation. And the final year of graduation, I fully sat in coaching classes. My teacher was good. I studied a lot. I was very committed. Then, when I did the postmortem, I realized that though I had a lot of knowledge, I was not able to pick the right answer because questions will be a little twisted. It won't be direct. So, because of that, I failed in my first prelims. Now, after that, now comes my second prelims. Now, I had learned that it's not just about reading revisions, it's about solving papers, getting the trick, getting the knack of finding the right answers. So in my second prelims, I had nearly 1 year time, just like you guys. I was in the same stage like you are, not clearing prelims, waiting for the next prelims. So initially, I did integrated preparation for both prelims and mains. I wrote a few answers and finished my optional. Finished my optional, and then last around 2.5 months before prelims, it was fully prelims oriented study, where I solved a lot of question papers and also revised them.
And before going to the examination itself, I was pretty confident because I was getting good marks, 120 plus, 130 plus. And then the exam happened. Then evaluated on the day of the exam, I was getting around 140 plus. And when the result came, I had got actually 148. Cutoff was 116. That is 32 marks more than the cutoff. Now, what made the difference? The difference was that in my first attempt when I failed, I did only hard work. That is, I was only studying. In my second attempt, along with the hard work, I married it with smart work. That is, solving papers and seeing where I went wrong, where I should avoid mistakes, and that's how it helped me. Then after that, mains happened, interview happened. I got ranked 598. Then my desire was to be in the police service. I realized that I won't be getting the police service. So again, I had to give prelims, but this time the gap between the declaration of the result and the prelims exam was only 17 days. Now, in the 17 days, I did not have the time to read, revise the standard books. So again, I resorted to my original thing that already I have knowledge. Now, let me solve the question papers. I solved maybe 30, 40 question papers and revised them. Looked into a little bit of current affairs. Then I got around 136. Cutoff was 108. This was in 2017. Then after that, that year I went to the interview, didn't happen. Then again next year, this was in 2018. I got I think around 132. Cutoff was I think around 100 plus. Again I cleared by more than 30 marks above cutoff. And every year I have given, I've cleared the forest cutoff. At least by 20 or 30 marks, I've cleared the civil services exams cutoff. So the thing is, now you have to build a strong foundation. You need to be strong with your basic things: history, economy, geography, polity, all these things. Because of your knowledge, you'll be able to solve maybe 30, 40 questions. But that is not enough. You have to solve more number of questions. How will that come? That will come by developing the knack. That will happen only when you solve the papers. And whenever you solve, you see, whenever you go for any guesses or use any tricks, when you read the synopsis, you see whether those things are working. If those things are working, then you continue. If those things are not working, discontinue. Even before you go to the prelims itself, you will have some amount of fair idea whether you will clear or not. Because consistently, if you're getting 120 plus, 130 plus in the prelims papers which you're solving, then the probability of you clearing prelims is very high. But if you're getting only in the 70s, 80s before going to the examination, then the probability is less. So prelims is actually a very fair game. The reason I tell you is, unlike mains and interview, in mains there is some amount of subjectivity. You say someone might like, someone might not like. You never know whether the person had a fight on the road and then evaluated our paper, or whether he was very happy when evaluating your paper. There is optional subjects. Each optional is different. Then even in essays there are options. So there is a lot of subjectivity. Interview also there is a lot of subjectivity. Someone who can get 140 in 1 year, next year he gets 200. Again, someone who has got 200 in next year he gets 140. Because there is subjectivity. Human beings are involved. But prelims is extremely fair. All the questions are the same for all the 4.5 lakh candidates for it. Second, it is a machine evaluating you, not any human being. So it is entirely in your hands. So I think with this, I'll conclude. And as more and more questions come, I will address them. I think that will be better rather than a monologue. देयर आर फ्यू क्वेश्चन हर्ष जो मैं बोलूंगा जो ऑलरेडी लोगों ने पूछ रखे हैं ठीक है Yes, sir. दैट वाज वन रिलेटिंग टू कि हाउ टू यूटिलाइज करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स Yes. Actually, current affairs, many questions come indirectly from current affairs. Directly, though, the number of questions might be less. And with every passing year, the examination is becoming more dicey. Directly, they won't ask from current affairs. For example, there would be some news about some new species discovered in maybe Andaman and Nicobar. Now they'll ask you about that species. So your knowledge of current affairs is very important. How will you develop this knowledge? One is read a standard newspaper. Second is stick to anyone.
monthly current affairs magazine. Then third thing is whenever you solve the tests of different institutes, example Kalam, then they would cover current affairs, the most important current affairs. So through that it will get covered. So take care of these three things. Current affairs is very important. Uh, yes, and not just don't just buy hard current affairs. Absorb current affairs because if you buy hard, only when they ask directly you will be able to answer. But rather when you absorb it, even when they ask you indirectly, you will be able to use that information to arrive at the answer. That is what I would say about current affairs, sir. Okay. So to summarize what Harshad said, that you have to uh, use multiple sources. One of them is newspaper, another is monthly compilation of any institute, and then the third thing is कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं, obviously not all the current affairs deserves to be converted into a question. So जो deserve कर रहे होते हैं क्वेश्चन बनाने लायक, उन पे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाया जाएगा. So those are important current affairs, ठीक है, and you should utilize them as well. One more Sir, thing, Harsh, that Nisarga, yes, sir, Nisarga has asked a question as to what sources I refer to for prelims. Nisarga, actually, it is the same set of sources for prelims as well as mains. For example, polity is Lakshmikant itself. Current affairs is the current affairs magazine in the newspaper, but the orientation will change. For example, when reading current affairs, there will be few prelims related content. There will be some mains related content, and you should which to focus on. You will only get to know as your experience increases. So okay. sources will remain the same, just the approach will change. Okay. So we will explain the rest of the. We will take the rest of the questions as well, और कुछ questions जो है, I will also ask on your behalf from Harshavardhan and Samir Jena. But before that, let me briefly explain you कि हमारा जो part था उसमें हमने पहले 6 महीने का तो बता दिया आपको कि हमारे प्रोग्राम में क्या है. और दिस इज एन इंटीग्रेटेड कोर बैच जिसमें इंटीग्रेटेड तैयारी है प्रीलिम्स की भी मेंस की भी. तो अगले 6 महीने की तैयारी कैसे होगी, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू ब्रीफली. दिस इज लास्ट ईयर हमने अभी 2022 के लिए. इज इट बीइंग शेयर्ड? कैन यू सी माय स्क्रीन? No, sir. लेट मी शेयर दैट. सो 2022 में भी हमारा कोर बैच रन हुआ था एंड these are the few testimonials. ठीक है, 2021 कोर बैच के तो हमारे टॉपर्स जो हैं ऑलरेडी दे आर विद अस इन दिस गूगल मीट. डेफिनेटली दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी टॉपर्स नेक्स्ट ईयर. इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आर वेरी हार्ड वर्किंग, जिन्होंने प्रॉपरली सारी क्लासेस भी हमने रन करी थी, सारी क्लासेस अटेंड करी, सारी टेस्ट दिया और टाइम से दिया. काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पे करते हो ना, मार्च रस की तरह, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पवेड में या जिनका भी ऑप्शनल है कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि सारे खर्चे मार्च में करती है. तो अगर आप सारा खर्चा मार्च में करोगे तो एफिशिएंसी डेफिनेटली कम हो जाएगी. अगर हमें खर्चा कुछ एग्रीकल्चर के लिए करना है तो मानसून सीजन से पहले करना पड़ेगा. आप मार्च में करोगे तो कोई यूज का नहीं है, वो अगले साल के लिए हो सकता है यूजफुल हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ आपको थ्रू आउट वो टेस्ट भी टाइम से देने हैं. प्रिपरेशन थ्रू आउट द 1 ईयर जारी रहनी चाहिए और उतनी ही इंटेंसिटी से जारी रहनी चाहिए जितनी इंटेंसिटी से आज के डेट में कोई मेंस लिखने वाला बंदा पढ़ रहा है. ठीक है. एंड देन ये हमारा जो प्रीलिम्स कोर बैच होगा, ठीक है, और ऐसा ही लास्ट ईयर भी था. इसमें कुछ प्रीलिम्स एमएमपी सेशन होंगे, 17 वीक की प्रॉपर क्लासेज होंगे. फिर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, 22 टेस्ट होंगे. टेस्ट सीरीज के बारे में एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं. आई मीन यूपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, हमारी कोशिश होगी कि हम उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें. और एक चीज है जो हम फोकस करते हैं, देयर इज 80-20 रूल. 80% of the questions are asked from the 20% of the syllabus, which are more conceptual in nature. So हमारा फोकस ये होता है कि हम इस 20% पे ज्यादा ध्यान दें ताकि आप 80% को आंसर कर सको. अगर हम ऐसा करें कि हम ये जो बाकी 20% जो क्वेश्चन बच गए हैं इसके पीछे हम भागे, ठीक है, तो उसके लिए एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा और रिटर्न कम आएगा. और इस चक्कर में जो बाकी 80 क्वेश्चंस थे ये भी आप भूल जाओगे. That's why we focus more on this 20%, जिससे रिपीटेडली
प्रीलिम्स में क्वेश्चन जिन पार्ट ऑफ द सिलेबस है यूपीएससी पूछता है। ऐसा नहीं कि ढेर सारा फैक्चुअल चीज दे दी है, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत सारा एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया तो हमने पूरा टेस्ट सीरीज फैक्चुअल से भर दिया। दिस इज वी डू नॉट डू, क्योंकि फैक्चुअल चीजें एग्जैक्टली वही फैक्ट पूछा तभी यूटिलिटी है उसकी, अदरवाइज उसकी यूटिलिटी नहीं है। जबकि कंसेप्चुअल चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो कहीं और पे, उन कंसेप्ट को अप्लाई करके दूसरे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, उनको लर्न करने की जरूरत होती है। सो आवर स्ट्रेस इज मोर ऑब्वियसली टू मेक यू कस्टम विद द यूपीएससी पैटर्न। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे उसी प्रोपोर्शन में जितना कि यूपीएससी रखता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रीलिम्स एमएमपी सेशंस के बारे में बताऊंगा। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। हर जो आपका हफ्ता होता है, हर हफ्ते में ये 7 दिन है, तो वो एक हफ्ता किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोटेड होता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप उस हफ्ते में उस स्टैटिक चीजों को पढ़ते हैं। सैटरडे को अब करंट अफेयर की क्लास होती है, तो सैटरडे को आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, और संडे को इसी स्टैटिक चीज का और इस करंट अफेयर का मिला करके संडे को 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। दिस इज हाउ योर वीक इज प्लान्ड। हर वीक की पहले से प्लानिंग है कि इस वीक में कौन सी चीज पढ़नी है और कितना वेटेज उसको देना है। देन ये हर दिन जो ये चीजें हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो हर दिन आपका ऐसा बीत रहा है कि आपको हर दिन का एक छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी का वीक है तो किसी एक दिन दे दिया जाएगा कि आज मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ के आना है, ठीक है। तो आप दिन भर में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के आओगे, सेल्फ स्टडी। देन इवनिंग में 2 घंटे की क्लास होगी इस मॉनेटरी पॉलिसी पे ही, ठीक है। अब आपके मन में नेचुरल से डाउट आएगा, जब हम खुद ही से पढ़ के आएंगे तो आप क्लास में हमें क्या पढ़ा रहे हो। सो क्लास में हम सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहे, जो हर्ष ने कहा जैसे कि देयर आर 2 थिंग्स, वन इज नॉलेज एंड द नेक्स्ट इज अप्लाइंग दैट नॉलेज, द स्किल टू आंसर द क्वेश्चन। कि हम 30-40 क्वेश्चन ही हमको पक्के से पता होता है, बाकी क्वेश्चन जो है हमें अप्लाई करके नॉलेज को सॉल्व करना होता है। तो हमने क्लासेस को भी वैसे ही डिजाइन किया है। क्लासेस में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एमसीक्यू को स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे थ्रू लाइव पोल, ठीक है। तो क्लासेस ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन क्लास में आप लाइव पोल के थ्रू एमसीक्यू को अटेम्प्ट करोगे, और उसमें अटेम्प्ट करने से आंसर निकलेगा कि सर 14 क्वेश्चन 14 स्टूडेंट ने सही किया, 7 स्टूडेंट ने गलत किया, फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो 7 लोगों ने गलत किया है उसमें लोग क्या गलत सोच रहे हैं ये भी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आंसर इज डी और सारे लोग ए आंसर कर रहे हैं बाकी लोग, ठीक है। वो लोग एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सब लोग गलत मान रहे हैं जो कि स्टेटमेंट सही है। तो द डिस्कशन मोर अराउंड दिस स्टेटमेंट कि भाई ये कौन सा ट्रैप था जिसमें आप लोग फंस रहे हो, इस ट्रैप को कैसे एलिमिनेट करना था। यहाँ पे आपको ये दिखना था कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नन, तो नन कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू आउट दी कोस्टल रीजन, तो कोई भी स्पीसीज थ्रू आउट कैसे पाई जा सकती है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है जिसके बेसिस पे आप चीजें एलिमिनेट कर सकते हो, इन पे जो है आपका डिस्कशन कराया जाएगा। Then apart from discussing those things in the question, we shall also discuss the other things which were not asked in the question। क्योंकि कोई भी टॉपिक पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे हमने बनाई, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे वी वुड बी एबल टू गिव 3 स्टेटमेंट, बट उस पे स्टेटमेंट तो और भी 3-4 बनाई जा सकती है। तो वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो आपको ऑलरेडी पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको नोट कर लोगे और आपका नॉलेज एनहांसमेंट हो जाएगा। तो इन क्लासेस में ऐसा बनाया गया कि आपका क्वेश्चन आंसर करने का स्किल भी, एमसीक्यू सॉल्व करने का इंप्रूव होता रहे, एलिमिनेशन टेक्निक भी आप सीखते रहो, और एट द सेम टाइम नॉलेज भी मिलता रहे, और आप पहले से दिन भर में अपने जो सोर्सेस थे वो रिवाइज करके आए हो। तो एक प्लान्ड तरीके से आपका प्रीलिम्स का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एस्पेक्ट प्रीलिम्स का छूटेगा भी नहीं, आपके ढेर सारे एमसीक्यू भी हो जाएंगे, एमसीक्यू की टेक्निक भी आप इंप्रूव करोगे धीरे धीरे। और फिर उसके बाद वीकेंड में टेस्ट भी होगा, उस टेस्ट में आप टेस्ट करोगे कि 100 क्वेश्चन में यूपीएससी टाइप में 2 घंटे में हम कितना कर पाए हैं। ओके, सो इंटीग्रेटेड कोर बैच इज लाइक प्रीलिम्स कोर बैच प्लस मेंस कोर बैच। तो मेंस कोर बैच का जैसे हमने प्राइस बताया था आपको, इट वाज 13,000 प्लस 4,500। प्रीलिम्स कोर बैच में 2 चीजें हैं, एक टेस्ट सीरीज है और एक एमएमपी सेशन है, जिसको हम पीएमएमपी बोलते हैं, प्रीलिम्स मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम। टेस्ट सीरीज इज ऑफ 5,000 रुपीज एंड पीएमएमपी प्रोग्राम इज ऑफ 7,000 रुपीज। इसमें 17 हफ्ते की क्लासेज है, ठीक है। हर क्लास 2 घंटे की होगी, करीब करीब 15 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस, आई मीन 15 से 20 टॉपिक हर क्लास में डिस्कस किए जाएंगे और 2 बार रिवीजन होगा। लेट मी शो यू द शेड्यूल एज वेल।
ठीक है, दिस इज द शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। ठीक है, पहले हम एक पॉलिटी का करेंगे और एक करंट अफेयर होगा, तो एक साल के करंट अफेयर का भी डिस्कशन हो जाएगा। तो करंट अफेयर आप दो तरीके से करोगे, एक तो टेस्ट में आप करंट अफेयर करोगे ही, और एक करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ छूट गई वो यहाँ याद होगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा तो चीजें याद हो जाएंगी। अल्टीमेट मकसद ये है कि चीजों का मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। फिर पॉलिटी का और करंट अफेयर इन्हीं का टेस्ट हो गया। तो ऐसे जनवरी से शुरू होगा। एज यू कैन सी, पहले 12 वीक में 6 सब्जेक्ट मेजर मेजर होते हैं, 11 वीक में हमने करंट साइंस एंड टेक को एक ही वीक दिया है क्योंकि उतने क्वेश्चन नहीं होते। 11 वीक में पहला राउंड रिवीजन हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगले 6 वीक में सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस ऑल दिस विल कंप्लीट बाई 30th अप्रैल। अप्रैल तक ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। देन मई के मंथ में फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे, और मई के एंड में आप यूपीएससी का एग्जाम दे दोगे, और उसमें फ्लाइंग कलर से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड देन it's like कि जैसे हर्ष had also said and Samir was also of the same opinion कि 3 से 4 महीने डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। जैसे अगर कोई बिल्कुल भी मतलब अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो हो सकता है 5-6 महीने प्रीलिम्स को दे, अदरवाइज 3 से 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू कि शुरू के जो जब एमएमपी शुरू होगा तो यूजुअली पॉलिटी अच्छे से लोगों का प्रिपेयर्ड होता है, इकोनॉमी अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है, और फर्स्ट राउंड में सिलेबस भी थोड़े थोड़े से होंगे। सो आपको दिन भर प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है, थोड़ा टाइम प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है और थोड़ा टाइम मेंस के लिए भी पढ़ना है। बट आफ्टर फरवरी, लास्ट के जो मार्च अप्रैल मई है, ये 3 महीने डेडिकेटेडली सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, तब मेंस नहीं पढ़ना। तो हो सकता है जैसे मेंस का हमारा 25 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा था शेड्यूल, तो अगर आप कुछ चीजें आपकी छूट जाए, या मोस्टली ऑप्शनल की चीजें हो सकता है, ऑप्शनल जो है 6 महीने में अच्छे से आपका नहीं तैयार हो, तो ऑप्शनल की चीजें आप यहाँ पे प्रीलिम्स शेड्यूल के साथ साथ हाफ ऑफ द डे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ो और हाफ ऑफ द डे ऑप्शनल के लिए करो। शुरू के जनवरी फरवरी, आधे फरवरी तक, डिपेंड अपॉन आपको कितने टाइम की जरूरत है। अगर आपको 4 महीने के लगता है कि जरूरत है, ठीक है, तो आप जो है जनवरी तक पढ़ो। ठीक है, आपको लगता है कि 3 महीने काफी है तो आप फरवरी तक जो है ऑप्शनल पढ़ सकते हो। तो दिस इज हाउ यू शुड इंटीग्रेट होल ऑफ योर प्रिपरेशन टिल नेक्स्ट प्रीलिम्स। ठीक है, एक और चीज है कि फॉर दी जो टोटल प्राइस हो गया इन सब चीजों का मिला करके, वो हो गया 29,500। बट फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट वी आर प्रोवाइडिंग 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट को सिर्फ 15,000 रुपए में मिलेगा। ठीक है, प्रोग्राम जैसा हमने दिखाया था पहले, 8 तारीख से शुरू हो रहा है, और इसकी जो ज्वाइनिंग होगी, एडमिशन, वो परसों, मतलब मंडे, सॉरी संडे के रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टुमारो हमारे वेबसाइट पे शेड्यूल आ जाएगा पूरा तरीके से, सब्जेक्ट वाइज करके सारी कुछ चीजें। ठीक है, और टुमारो नाइट संडे 12 बजे से इसमें एडमिशन शुरू होंगे। ठीक है, 12 AM। ओके, इट वुड बी प्रोबेबली मंडे 12 AM रादर देन संडे। ठीक है, और किसी को अगर प्रोग्राम के बारे में कोई डाउट हो या फिर सर से भी कुछ पूछना है तो अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन जो लोगों ने ग्रुप पे डाले हुए हैं, आई विल टेक देम फर्स्ट। रिवर्स ऑर्डर में ही चलते हैं। हिंदी मीडियम, देखो जो मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग इवेलुएट तो आपके हिंदी के भी आंसर कर देंगे, बट उसके मॉडल आंसर सिर्फ इंग्लिश में है। प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उसका एक्सप्लेनेशन भी और सारी चीजें, क्लासेस जो होती है वो बाइलिंगुअल होती है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है सारी क्लासेस। ठीक है, सो हिंदी वाले लोग पूरी तरीके से तो सपोर्टेड नहीं है क्योंकि मेंस का मॉडल आंसर हिंदी में नहीं है, एक्सेप्ट मेंस मॉडल आंसर एवरीथिंग इज बाइलिंगुअल। मेंस के क्वेश्चंस भी बाइलिंगुअल होते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल होते हैं, सारे सेशंस बाइलिंगुअल होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Somesh Tripathi is asking how to cover economic for prelims. So Harsh, you may please answer this. One thing is, for example, when you join Madhusudan sir will cover most of the topics of economy,
Along with that, they'll give you notes. They'll tell you what are the standard books to be read. And in fact, for not just economics, for any topic, your foundation should be through a proper teacher like Madhusudan sir and through standard books. That is for economics as well as all the topics. ठीक है। वन मोर थिंग, जैसे अगर कई सारे लोग ऐसा होता है ना कि उन्होंने कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं की होती है, ठीक है, और वो सेल्फ स्टडी पूरी तरीके से कर रहे होते हैं, सो फॉर देम देयर इज प्रॉब्लम, ठीक है, कि उनके पास वो मतलब इकोनॉमी की एक सोर्स से कहीं पे होता नहीं है, और कई सारे लोग मृणाल शुरू करते हैं, ठीक है, वो खत्म हो नहीं पाती है, मतलब वो 1000 पेजेस के आजकल मृणाल के नोट्स पहुंच गए हैं, तो खत्म हो नहीं पाता है। तो जो लोग हमारे फाउंडेशन कोर्स में जुड़ेंगे उनको तो हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, यू कैन पर्सनली अप्रोच अस कि हम वही वाले नोट्स आपको प्रोवाइड कर दें अगर आपके पास इकोनॉमी के नोट्स नहीं है तो, ठीक है। अदरवाइज फिर मेंस के लिए भी हम लोग इकोनॉमी के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी कवर। देन ऊपर से आते हैं, ऊपर से कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिन लोगों के क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग? I think newspaper are more relevant to men's also. So Samir can please answer it. Yes. As sir told, newspaper reading is really important. Not only for men's prelims, for prelims also it is important, but for men's it is more relevant now, you will say. Because many points, whatever you are studying in newspaper, this can be useful in men's. But the problem is many a times we don't know exactly what are the things we need to read from newspaper. That is the thing, and how to do some note making. Like many a times, people have asked me like how to do note making from newspaper, and sometimes this happens that like we have made so many points, so many facts we have written that at the end we are not able to revise. These are the problems like people generally face. What I have seen. So sorry, I have a little bit cold. So, Yeah. so Samir को कल fever था, but still he came. I would like to it's okay. give a special thanks here for Samir. Uh, okay, that's fine. First, before reading newspaper, the most important thing, as I told in the beginning also, that we should know the syllabus of our UPSC. That is the most important thing we should know. Because without knowing the syllabus, we can't know that what are the important things we need to study from newspaper. Because, like, for example, we are studying Hindu or Indian Express, like 15, 20 pages newspaper. If we go on studying every point, every news, then obviously it will take maybe 3 hours, 4 hours, and many points are of no use for UPSC point of view. That's like literally I'm saying no use. Okay. So first thing is we should know the syllabus, and after that, whenever we are like going glancing through the newspaper, we should know that whether this point is relevant for our exam preparation or not. That is the most important thing. If this point is relevant for exam preparation, then only we should read it. Otherwise, we should skip it completely. For example, like sports news. Okay, sports are not important for exam point of view. Maybe last prelims they asked some questions, but it is not a general trend. But they asked 2 3 questions. It doesn't mean that we should like study in detail all the sports news. Okay. Then another thing is like many political news, like what happened in this political party, what happened in that political party. These are also not very relevant. Okay. So only read those points which are relevant for your UPSC syllabus and make notes from this. And regarding note making, I will say some important things. This may be useful. Many times, suppose we are reading some editorial which may be important for UPSC, and what we do, we make a like bulky note. Like suppose we are reading an like article written by some author, and we make some 1 to 2 pages of notes. Every point we write. But just think, if we go on writing like this for like maybe 360, like 1 year, or maybe more than that. So how will you revise this? It's very difficult to revise after that. Like it will be a very bulky note, and at the end, like you will only have headache when you will see these notes. So most important thing is write only very important points. Like not write the generic points which are written. Like anyway, if they have written a big article, they will write generic points also. Don't write the generic points. Only write some specific points if you are finding that you will not get in some general sources. Like it may be an important Supreme Court judgment, it may be an important fact, or maybe an important case study. Okay. Like if you are reading a big article, hardly there should be 2 to 3 lines which may be relevant for you to write the notes. You should focus on those points. Okay. So these are the things related to newspaper reading. I think we should ठीक है, keep it. just to add to what Samir told,
कि एक तो और है कि जो नोट्स आपको बनाने हैं ना वो सिलेबस वाइज बनाने हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी मैंने देखा है कि वो डेट वाइज बनाते हैं कि आज के डेट के मैंने बना लिए, कल के डेट के बना लिए, ऐसे कर लिए। तो वो आप रिवाइज नहीं करोगे ना, क्योंकि जब भी आप टेस्ट सीरीज दोगे या कुछ भी दोगे तो आप एक पार्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से दोगे, ठीक है। तो उससे पहले ये होना चाहिए नोट्स आपका इस तरीके से कि उससे पहले आप जाकर के उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। तो सिलेबस वाइज आप अगर कॉपियां बना रहे हो तो उसमें बांट लो, या फिर अगर आप वन नोट या एवर नोट ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें सिलेबस वाइज जो है अपना डिफरेंट पेजेस बना लो, और उसमें जाकर हेल्थ में जाके हेल्थ की चीजें लिखो, एजुकेशन में जाके एजुकेशन की चीजें लिखो, ठीक है, वुमेन में जाके वुमेन की चीजें लिखो, ताकि आप जब वुमेन वाला टेस्ट दे रहे हो, सोसाइटी का टेस्ट दे रहे हो, तो जाके वुमेन का, ग्लोबलाइजेशन का आप नोट्स करंट अफेयर रिवाइज करके जा सको, ठीक है। और फिर जैसा समीर ने बोला, एकदम टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, और फोकस करना है कि वैल्यू एडिशन को हम कॉपी करें। जो चीजें मेरे क्लास नोट्स में ऑलरेडी है, जो किताब में है, जो लक्ष्मीकांत में है, उसको दोबारा करंट अफेयर के नोट्स में भी आने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो चीज आपके स्टैंडर्ड नोट्स में ऑलरेडी नहीं है वो वैल्यू एडिशन करना है। बट आई वुड अगेन से कि अगर किसी चीज का नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल आपके पास मोस्ट लाइकली राइट टू एजुकेशन का नोट्स होगा। अब राइट टू एजुकेशन का अगर एनालिसिस आता है कि उसमें क्या चीजें कम रह गई, खराब हो गई, तो उसी नोट्स में जाकर वहीं पे ऐड करो। कुछ डेटा अगर आएगा कि राइट टू एजुकेशन में ये कमी रह गई है, इतने परसेंट लोग अभी भी जो है एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो वहीं पे जाके नोट करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि राइट टू एजुकेशन का आपका नोट कॉम्प्रिहेंसिव बनता जाएगा। तो आप अगली बार जब भी एजुकेशन का टेस्ट देने जाओगे उससे पहले आप पूरा एजुकेशन रिवाइज कर पाओगे। अगर वो एजुकेशन बिखरा पड़ा है 5-6 जगहों पे, ठीक है, तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। देन देयर वाज दिस क्वेश्चन कि एपीआई कैसे कैलकुलेट होता है। एपीआई में आप बेसिकली अपना जितना इनपुट करते हैं उसकी आप एंट्री करते हैं कि आपने कितने घंटे राइटिंग करी, कितना मार्क्स के राइटिंग करी, कितने घंटे पढ़ाई करी, कितना ऑप्शन पढ़ा, सबके हमने वेटेज दिए हुए हैं, और वेटेज से वो एल्गोरिदम के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो इस आपको बस ये देखना है कि जो 100 ऑप्टिमम मार्क्स एपीआई के आने चाहिए थे, आपके 100 से कितना दूर आ रहा है। अगर आपका 100 से दूर आ रहा है, 20-30 आ रहा है, इसका मतलब आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो। आपको तुरंत अपने टीचर से संपर्क करने की जरूरत है, तुरंत अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है कि आपका एपीआई स्कोर बढ़ो। या तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप हो सकता है सिर्फ पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप लिख नहीं रहे हो, तो हमने वेटेज दे रखा है, लिखने का थोड़ा ज्यादा वेटेज है। या फिर आप सिर्फ लिख रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो उसके हिसाब से एपीआई में वो रिफ्लेक्ट होगा कि आप अगर एक ही चीज सिर्फ कर रहे हो ज्यादा, तो ठीक है। एक और है, व्हाट अबाउट सी सेट पेपर स्ट्रेटजी। हर्षवर्धन, यू मे प्लीज आंसर। See, actually, CSAT, I think 99% of the focus will be on GS, just 1% on CSAT. Because of that, CSAT has become a giant killer. Even many serious candidates are losing out on CSAT. Those who put, it's very saddening when you get very good marks in paper one and you're not able to clear CSAT. So I don't want anyone of you to go through that pain. First thing is UPSC has made it very simple for us that all we have to get is 33%. Now, in spite of that, if we don't get it, it is purely because of our mistake. Why does this mistake happen? Uh, one reason is that people take it for granted. They think that 33% is possible any day, but no, you have to be very humble. You have to give it sufficient amount of time. Second thing is that people, for example, in my case, I'll tell you, when I cleared the first time, I got 171 in CSAT. I took it for granted. I didn't solve papers later on. So I think last year, my CSAT score had come down to nearly 108. So from 171 to 108. So what does it show? You have to keep practicing. So at least once a week, twice a week, please practice CSAT. And if you're very weak in CSAT, you seek the assistance of someone like sir who will help you out. But for most of them, through their own effort, through solving a little more of question papers, they can easily make it. That is my take on CSAT. या सो जिन लोगों का सीसेट में थोड़ा इशू है, लाइक दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर द कॉम्प्रिहेंशन और मैथ क्वेश्चन, तो उनके लिए हम लोग दिसंबर या जनवरी के टाइम पे उस समय सीसेट की कुछ क्लासेस चलाएंगे। अभी तो आप मेंस पे फोकस करो, भले ही सीसेट वीक है, कुछ भी वीक है, अभी पूरी तरीके से टेंशन दिसंबर तक मेंस पे होना चाहिए। तो जनवरी के टाइम में यू कैन अटेंड दोज क्लासेस, ठीक है।
और जिन लोगों का वीक नहीं है बट ये है कि कुछ कारणवश रह गया है, ऑल्दो दे वेर गुड स्टूडेंट ऑफ मैथ्स और एप्टीट्यूड कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में, वो लोग तो आप प्रैक्टिस करो बस। पिछले यूपीएससी के जितने भी 10 साल के 12 साल के पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस कर दो, सारे क्वेश्चन की, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं है, दैट इज सफिशियंट। Then there was a question, sir, did you make notes from monthly magazine or directly revise them? How much is monthly magazine important? Samir, you may answer it. Yes, sir. So, with regard to mains preparation, I will say that yes, there should be an integrated preparation mode. As sir also mentioned, if you are able to like compartmentalize your notes making procedure, like notes should be as per like syllabus. Like for example, different points are in syllabus, human geography. Then in economics, there are different points like infrastructure or agriculture. So if you are able to mention right important points from this current affair magazine in these points, if you're finding it very useful, as I told, like don't like copy paste all the things whatever is mentioned in this current magazine in your like notes. This is not a benefit at all. If you are able to like find out some very important points, very important case studies or committee recommendations which you are thinking very different, you are not finding your in your genuine source, general source, and it can be useful in your like answer writing, then obviously you can do that. Not only I would say, not only from current affair magazine, whatever sources you are studying, like you will write tests, you will get model answers if you are joining mmp. So as sir told, like there will be like alternate discussions. Yeah, like if you get some good important points, then obviously you can mention them in your like syllabus points. If like very important points, then definitely this will help in your revision. Okay, so it is a good thing, but as I again I am repeating, this should be very crisp and concise. Not that all the points whatever is written, I am writing them. There is no benefit at all, and it will kill your time, and you will not be able to revise this. I'm telling you. Okay, so only be crisp and concise. Write very important points if you are writing. ठीक है, तो जैसा कहते भी है ना कि हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई वुड लाइक कि दोनों ही हमारे जो टॉपर्स हैं वो आंसर करें। हाउ डिड यू प्लान रिवीजन ऑन ईयरली, मंथली एंड डेली बेसिस? डेफिनेटली रिवीजन की स्ट्रेटजी हर किसी की अलग अलग होती है, तो ये अपना स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, आपको अपनी बनानी पड़ेगी। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आप पिक कर लो, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें। या समीर? Yes, sir. So, as sir told, like every person has their own strategy. So, don't stick to what we are saying. Okay. So, revision is important. That is important. But what is the like frequency of revision that completely depends on you. Okay. And obviously, like daily revision is sometimes becomes difficult. Like if you have started preparation now. Okay. So, not like if you don't have any content, what will you revise? So, first you build on your content for some days. After that, you accordingly plan your revision. Like if our schedule is given, for example, like in between prelims and mains, there are directly revision. Like in your schedule, also there are like revision points were there. Like for example, MMP we are writing every alternate day. So we are studying these points, and at the end of the week, we have the complete test on all the MMP topics. So again, you are studying them, and after that, again, or if all the like once all the topics are covered, then in the month of December, again we are writing another test. So automatically there are like 2 or 3 revision of every topic. So this was in between prelims and mains. So before prelims, like this is like long period is there. So if like once you have built upon your content, then you can like if you are comfortable like every week you can have your revision. And for facts, I told also in the beginning, for facts whatever facts or statistics you are going on making. So in your free time you go on revising them if possible. Okay, this is because many a times now, like these are purely factual points, and then we go on forgetting these points. So if dedicatedly you can keep some time for like revision of these facts, and if you have some good peer group also, you can discuss these points among yourself. This becomes very much helpful in many a times. Okay, if we discuss these points with our like peer groups, like sometimes we don't forget, and it goes to our muscle memory. And one point it goes to our muscle memory, then we remember it for long time. Okay, so this is a good strategy you can adopt, like discussing with your friends. Okay, and purely this is like your own strategy. Just don't stick to that what I told, that okay this should be your like frequency of revision. It's not like that. Still 6 to 7 days, if once you build up something on your content, you can do upon that. Okay.
Yeah. Hers, would you like to add something? हाँ, एक चीज मैं ऐड करता हूँ, जैसे आप जो डेली बेसिस पे करोगे, तो एक तो आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। मतलब जिन लोगों का एक बार कंप्लीट हो गया है, आपने एक बार सिलेबस कंप्लीटली पढ़ लिया है, बाकी लोग अपना एक शेड्यूल बनाओ। ठीक है, कि क्या टारगेट है आपका। जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तब तो हमने शेड्यूल बना के आपको दिया है, तो आपको पता है कि 3 दिन बाद मेरा इस पर्टिकुलर चीज का टेस्ट है, तो पहले उसका रिवीजन करना है। देन द लाइफ इज सिंपल। अगर आप खुद से कर रहे हो तो खुद से कोई एक वैसा ही शेड्यूल बनाओ। ठीक है, और उसको आप रिवाइज करना है। फिर जो डेली रिवीजन की बात आ रही है ना, तो डेली व्हाट यू कैन डू कि ऐसा एक पेपर आप साथ में रखो, और इस पेपर पे जो भी फैक्ट्स या याद करने वाली चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको डिफिकल्टी से याद होती है, या फिर पॉइंट, कई बार फैक्टर होते हैं, कौन कौन से 4 फैक्टर हैं, ऑप्शनल में ऐसा काफी सारी चीज होता है। ठीक है, उसको आप छोटे छोटे एकदम सिर्फ, मतलब वर्ड 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 जो है, एक एक वर्ड के छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाओ। और व्हेन यू इन द डे, जब आपका डे कंप्लीट हो गया, आपका हो सकता है पूरा पेज भर जाएगा, रात को सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज करके सो। ठीक है, तो डेली बेसिस पे एक तो आपने लॉन्ग टर्म का रिवीजन किया, और फिर जो आज पढ़ा उसको भी एक बार रात को आपने रिवाइज कर लिया, उन फैक्ट्स को, क्योंकि फैक्ट्स याद होने में Nice. Now you might think prelims is next year. By the time you close your eyes and open them, you will have your next prelims. So keep it very minimal, be very focused. Don't get distracted just because someone is doing something. You don't go beyond all that. That is my take on it. या शिवम इज आस्किंग कि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्या आप बता सकते हो। शिवम, हम फॉरेस्ट के लिए एक अलग से सेशन करेंगे जिसमें हम फॉरेस्ट की कैसे तैयारी करनी है उस पर फोकस करेंगे। निखिल, मार्क्स है स्टैग्नेटेड, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। प्रोबेबली निखिल, हमें पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा इसको, कि आपने क्या चीजें की है, क्या नहीं करी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है। ठीक है, सो यू मे गिव मी अ कॉल सम टाइम एंड वी कैन डिस्कस इट। पल्लवी का एक डाउट है, सर इन 6-8 months कैन वी क्लियर द एग्जाम। वैसे तो अभी 12 महीने है, पता नहीं 6-8 months का ये टाइम होरिजन कहाँ से आ रहा है। आप बाकी 6 महीने क्या करने वाले हो। ठीक है समीर, आप अपने और बाकी अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से बताओ, क्या 6-8 महीनों में संभव है एग्जाम क्लियर करना। हाँ, जैसे सर ने बताया कि लाइक है हमारे पास अभी तो 11 महीना टाइम है। इवन 6 to 8 months भी आराम से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सर ने बताया कि हमेशा एक शेड्यूल बनाना है और शेड्यूल के हिसाब से चलना है। अब प्रीलिम्स टू मेंस का प्रिपरेशन जैसे 3 months में भी लोग करके, देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक माय फ्रेंड्स आर आल्सो देयर लाइक who have cleared in between in like in this 6 to 8 months is a huge time। like अभी तो वैसे भी हमारे पास हुई है अभी 11 months time। so don't think about this, just focus on your study, okay? So like you have 11 months now, so from today, like today onwards, you make your schedule
and rush to this preparation mode. So nothing is impossible. Like there are people who have cleared, but you need that एक है, sincerity and dedication. या बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये एक है ना, जैसे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अभी ये मत सोचो कि अभी जो है मैं पहले शादी कर लेता हूँ या कुछ ऐसे काम कर लेता हूँ। अगर आप कोई भी चीज पोस्टपोन कर सकते हो तो करो। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन आईएएस। ठीक है, मतलब मैं क्लास में स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि अगर किसी दिन तुम्हारा मन करे कि आज क्लास बंक कर देते हैं, तो क्वेश्चन ये मत पूछो कि क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई दूसरी चीज क्या। क्वेश्चन ये पूछो कि मेरे लिए आईएएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कोई दूसरी चीज। अगर है तो ठीक है, छोड़ दो फिर क्लास। ठीक है, लेकिन अगर वो चीज आईएएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है, फिर तुम्हें क्लास में आना चाहिए, फिर तुम्हें वो टेस्ट लिखना चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन अपन लेंगे, दैट इज कि एग्जाम के टाइम पे काफी सारे लोग जो है पैनिक कर जाते हैं, और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जितना डिजर्व करते थे या टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर आते थे, कई सारे आते हुए क्वेश्चन सही नहीं कर पाए हैं। सो हाउ टू मेंटेन दिस एग्जाम टाइम टेम्परामेंट। ठीक है, हर्ष, यू कैन आंसर दिस। Sir, could you briefly repeat the question, sir? इट्स सिंपली लाइक एग्जाम टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होते हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहे होते हैं, बट एग्जाम टाइम पे पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम टेम्परामेंट जिसे हम कह सकते हैं, और उसकी वजह से उनका स्कोर पुअर हो जाता है। एक बंदे ने लिखा है कि आई अटेम्प्टेड ओनली 44 क्वेश्चन, करेक्ट वाज 34। ठीक है, तो उसने 44 ही क्यों अटेम्प्ट किया? डेफिनेटली अगर 34 सही है तो बहुत सारे गेस वर्क और करने की जरूरत थी। ठीक है, सो ये टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें या कैसे मेंटेन रखें एग्जाम के दौरान? Sir, I would divide the answer into two parts. One is what can be done just to close to the exam, and what can be done from now onwards. From now onwards, one has to develop one's wisdom, one's calmness, composure, and the right word is sthita pragnata, where या you जो do गीता में not कहा get गया है, tensed. स्थित प्रज्ञ बने। So you should not get tensed just because there is an exam. To develop from now on, maybe physical exercise and copying someone who is always very cool, calm, that might help. But now coming to the second part, as you go closer to the exam, what is needed is that there is fear of uncertainty. So one way of reducing this fear of uncertainty is one day before the exam, 2 days before the exam, you go to the examination center, sit there, same time 9:30 to 11:30, solve a paper, then enjoy your lunch break there. Again from 2:30 to 4:30, again you solve a paper. 2-3 days if you do that. In policing, it's something called recce. Whenever a criminal does a crime, you will actually go there. 3-4 times he will go at around that time and he will see what is happening, how everything he will observe. So what happens because of that is on the day of the crime is very confident. So the same thing even you will have to repeat. You will have to do a recce. 2-3 days if you do that, then the final exam you will be like, I know everything. I know when to do, what to do, where to go. That you can do. Yeah, Harsh, And a criminal always does that. have Just to interrupt you, what does police do to stop it? uh, police actually a little they do other things, sir. For example, they पुलिस keep on पुलिस हमेशा ही लेट patrolling. आती है। The Okay, criminals have please an carry on. edge. So that's it, sir. Then apart from that, interact with always calm, cool, composed people. Someone because of whom your performance increases, especially closer to the examination, and avoid anyone who will induce panic in you. These are few of the techniques. ये लास्ट वाली पॉइंट हर्ष ने बहुत सही कही है। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो एकदम हमेशा रोते रहे कि यार जो है मतलब भाई साहब ये भी पढ़ा तुमने, ये पढ़ा तुमने, ये भी आ गया था, 10 साल पहले ये आया था, 5 साल पहले ये आया था, इस टाइप की बातें करने वाले लोगों को कट कर दो। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो अननेसेसरली का खुद भी डरेंगे, तुम्हें भी डराएंगे, खुद भी फेल करेंगे, तुम्हें भी फेल कराएंगे। ठीक है, तो इनसे दूर रहना है। एक और चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अगर ढेर सारा टेस्ट देते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, आप हमारे साथ भी जोड़ो, एक हमारा टेस्ट सीरीज देने के अलावा एक और टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए। अगर आप आराम से 40-45 टेस्ट देते हो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको वो एग्जाम भी जो है नॉर्मल सिचुएशन लगेगी। ठीक है, फिर वो पैनिक एग्जाम वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार बैठ के दे चुके हो। और एग्जाम के टाइम पे करो,
ठीक है, मतलब जब नॉर्मल डे भी आप टेस्ट देते हो तो वही जो 9:30 से 11:30 यूपीएससी का टाइम होता है, उसी टाइम पे बैठ करके आप एग्जाम दो। ठीक है। राजेश इज सेइंग कि प्लीज गिव मी सम टिप्स हाउ टू बी मोर कंसिस्टेंट। ठीक है राजेश, सेम फंडा है, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, आप डेली बेसिस पे नोट करो कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। समथिंग विच गेट मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। अगर आप कोई चीज मेजर नहीं करते हो, इम्प्रूव नहीं करोगे। हो सकता है आप डेली 1 घंटे ही पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मेजर करो, प्लान बनाओ, उससे ही डिसिप्लिन इंश्योर होगी, उसी से कंसिस्टेंसी आएगी। आप ये मत सोचो कि मैंने हफ्ते भर काम किया है तो अब संडे तो मेरा बनता है, मैं संडे को मैच देख लूंगा, एंजॉय कर लूंगा। वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, थोड़ा आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, एड़ी चोटी का जोड़ जिसे बोलते हैं ना, वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आई गेस वी हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेरीज। बाकी अगर कोई डाउट होगा सो यू कैन Excuse me, कॉन्टेक्ट मी sir. पर्सनली। यस चिन्मयी। Sir, may I just ask one question, sir? I know you are about to end. Just one thing, sir. So I have been preparing for last 4 months actually. So I have covered a few subjects till now, but sir, what I'm finding is that I'm not able to gain confidence. And when it comes to answer solving, like with regard to polity, especially, I'm not able to hit the right answer. So can you just suggest, like, whatever subjects we cover, how do we gain confidence? ठीक है, समीर यू मे प्लीज आंसर। समीर अनम्यूट। Sorry, sir. So as I told also, like confidence will come only with practice. So like whatever you have studied, don't worry, like it's only 3 months only. There are times you can improve if you are really working on it. Definitely it will improve. And just practice on it. Okay. Like suppose whatever, like just can you tell me like what are the things you have done till now, like in 3 to 4 months? Just I want to know, please, Chinmay. So I've done a little bit work on my current affairs. Like I've been reading the newspaper for around 1.5 months. And as far as the static part is concerned, I have covered polity and I have covered modern history and economics, sir. Okay. Like polity whole Lakshmikant you have covered? Uh, Sir, yes, I have done it. But the thing is that like I have done it, but I'm not able to basically consolidate and basically revise it in a well-planned manner, probably. Okay, fine. So, what I'm telling ki, okay, whatever you have studied, whenever you're writing, na, just first important thing is initially you don't stick to time, I will say. Take some time and think upon the question. Suppose you are right, you are trying to answer in question, write and answer to one question. So don't think about time that, okay, I have this much time limit. So I should write on this time limit. Initially, you give some thought, like initially maybe for 15-20 days, and try to think like what are the things you have studied. Are you able to remind it? Okay. And some current affairs you have studied, then try to recollect them and write them in your answer. It might be difficult, but take some time and write your answers. And once you write your answer, then compare with your model answer, or maybe if compare with your friends, if your friends have written, or whatever sources, like if other persons have written on it. Try to compare on this, and what are the things you have missed, and again try to improve on it. I told you, like only by practice only you can improve on this. It will take Yeah, some Correct, time. sir. Don't worry, it will yeah. take time. One small thing, समीर, कैन यू रिकॉल कि जब तुमने पहला आंसर लिखा होगा, यूपीएससी की तैयारी तुमने शुरू की कि अब हम आईएएस बनेंगे, तो पहला मेंस का जो आंसर लिखा, Hmm. ठीक है, कैसा था, कितना टाइम लगा उसको लिखने में? Yes, sir. That's what I'm telling. As I told, I joined one test series. When I started, like after I started preparation. So first test, it was 3 hours test. I took more than 4 hours, as I remember. And that too, in between, I was not able to write 2 questions. हाँ, And ठीक, but I was not worried. Like I was like in my flow only. I was very slow, and with time, I improved on it. And एग्जैक्टली। with time, सो I was able to दिस इज improve. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर कोई जो है ना, स्टार्ट बेबी स्टेप से ही करता है। पहले बच्चा गिरता है, ठीक है, तभी वो चलना सीखता है। तो चिन्मय, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले आप खराब लिखोगे,
फिर धीरे धीरे ही आपका आंसर इंप्रूव होगा. एंड Yes, sir. रिगार्डिंग अदर प्रिपरेशन एंड इम्प्रूवमेंट, आई थिंक यू कैन गिव मी अ कॉल और डिटेल में हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं Sure, लेटर sir. ऑन. Yes, sir. Yeah. ठीक है. Okay then, thank you everyone, and thank you Samir and Hers for joining us. And और होपफुली आप लोग देश का सर्विस करोगे और हमारा भी नाम रोशन करते रहोगे जैसा अभी तक किया है. ठीक है. एंड अदर पीपल जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है, बाकी और लोग आपको थैंक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, समीर एंड हर्ष. Thank you all, and all the best to everyone for your like preparation. And I hope ki all of you get qualified next year with good ranks and join your like preferred service. या Thank you, sir, and good luck to all of you. Thank you, sir. या All the best. लास्ट थिंग, जो लोग कनेक्टेड हैं, अभी अगर आप इंटीग्रेटेड कोर बैच लेते हो तो वो 15,000 पे मिलेगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को. सो डू ज्वाइन सून एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन हाई नोट. थैंक यू ऑल. हो गया. हाँ, कट कर